मैम स्टडी मैम लुक स्टेट मैम लुक स्टडी मैम जस्ट होल्ड मैम सामने आ मैम सामने आ दादा मैम मैम सामने दादा थोड़ा इधर है ना मैम सामने इधर हुआ तो देखो बताया Center please. Center. I'm here. Center. It's an award actually that I really cherish, and I'm privileged. I know I'm privileged to be in a position that I can be free in my mind and free in my choices, and also the people who have given me the platform to be free and to have the dream to be limitless. It also means that the industry has welcomed me and has given me that platform, the people who I've worked with. So to be versatile is something I really cherish, and I hope that I can constantly be that and have limitless dreams and realize those dreams always, because yeah, that's what I always want to do. I'm not going to answer that question, but I will say that it is any actor's dream to work with Sanjay Leela Bhansali. He's amazing, and it's my dream too. Okay, the dream is fulfilled. but we do hear Jayaji recommended your name to Sanjay sir, so anything on that? But what is it about Sanjay Leela Bhansali that makes him a dream director for every actor? There's passion in every single second of every single nano pixel of his frame. So that passion is just so, it drives you, and obviously it's infectious, and it's amazing. And that is what we all live for, right? To have passion in your work and to be inspired and to be able to respect somebody so much. I really have the utmost respect for him. You come from a royal family to be part of a film which is royal itself. I'm not going to answer your question because these are the things that you're saying. Sorry? Something about Maniratnam's film, the film song. A dream come true to be working with Mani sir. He is incredible. He is infinitely more than what I even imagined. Again, somebody whose films I've watched as a little girl and dreamt and said one day I'm going to be there, and just to spend time with him. I'm doing dialogue classes with him, spending a lot of time with him, discovering the character with him, shooting. It's been an insane, incredible experience. Madras Talkies, the entire team, I'm very, very close to them. I miss them. I've just come from Chennai, and I always miss them.
So it's really been an incredible experience, and one that I hope that I'll get again. I've tried with somebody like Mani sir sitting on the other side. It's been it's not been as crazy as I thought. It's tough, but it's been incredible. It's worth every effort. I do that and more for Mani sir. All your dreams are fulfilled. No, I have so many more dreams. I have limitless dreams. Can you share any dream which you would like to achieve? No, dreams are magic and dreams are secrets. So I'll tell you about my dream when it comes true. Like Mani sir's was a dream and it's come true. So the next time it happens, I'll tell you. Is it an exciting prospect to collaborate with Ranveer if it happens in future? With Ranveer? Yes, of course. In fact, Ranveer and I kind of started together with Shad's. He was doing a music video in France, and we started together at that time. This is almost 7 years ago. We were both jobless at that time. But yeah, it would be amazing to work with him. Yeah. मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं अभी भाग रही हूँ. Please, मेरी flight miss हो जाएगी. I have no idea. Why don't you ask Sanjay sir this question? But no, the fact that you're also a dancer. जी. The fact that you're also trained in dancing, Sanjay sir, any film that you do which has a lot of dance forms. So I've never really done a film that has a lot of dancing in it, so I don't know how it'll be. But I would love to explore that. It is something I haven't done. As long as you guys keep saying that I have potential, I'll keep doing more work. कहाँ के लिए फ्लाइट पकड़ रहे हैं? आपका आना है? दिल्ली. I'm hosting the Condé Nast Traveler Awards. मैं होस्ट कर रही हूँ. अच्छा मैं भागूं प्लीज. Can we get a picture together? Okay, yeah, you guys click first. Aditi, Chandrika has to pick one picture for her. Come. Here, award. Okay. Thank you. Okay, thank you guys. We have to go now. No. Come.
Many congratulations. Thank you. For the award. Thank you. Could you just tell us कि ये award किस लिए था and probably another award for you? For being fashionable. I think it's for fashion icon, global icon. I think. Sorry. It's an iconic series. I thought it was for fashion, but it's just for being a global style icon. So this is the start of the wonderful award collecting process of this year for you. I don't know. I don't believe that it's important to. There's something very, very nice that I studied or learned when I was younger, that the process should be more exciting than the reward. And जब आप फल के बारे में सोचते नहीं हैं, तब वो फल automatically आ जाता है. And I really believe that. So the working in movies only has been so rewarding for me. That's the most important thing. सोनम, हमने कई लोगों से बात की इस बार. हाँ जी. तो सब आप सबकी फेवरेट हैं आप इस बार अवार्ड जीतने के लिए नीरजा के लिए. हाँ जी. National award. Oh, okay. नीरजा के लिए. हाँ जी. जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही हम्बलिंग है कि लोगों को लगता है कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, पर ऑनेस्टली I'll not be disappointed if I don't get it, because for me it's important. Doing the film itself was very important. Sonam, you will have a special appearance in Sanjay Dutt's biopic. So anything on that front, if you could tell us? That you have to speak to Raju sir about. I can't talk about any of my upcoming films till the directors and producers themselves don't speak about it. Raju sir, one in your wish list of... Yes, I would love to work with Raju sir, and I would love to work with him in whatever capacity I can. Yes, I am excited for it. Yeah, I've already done my show with Bebo. Thank you. It was very nice. सोनम, आज ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए अवार्ड दिया जा रहा है. आप भी काफी ब्रांड एंडोर्स कर चुकी हैं. हाँ जी. कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके लिए कि किसी ब्रांड जो भी मैं ब्रांड्स इंडोर्स करती हूँ, मैं वो ब्रांड्स यूज़ करती हूँ. Whether it's L'Oreal, whether it's Snickers, whether it's Colgate, whether it's any of the brands that I endorse. You know, I don't know anybody who also doesn't use these brands. मतलब सब लोग यही brands use करते हैं. I use the brands. So I am very responsible as an artist. I'm very responsible as a human being. I hope I am. So I will not endorse something that I feel I don't believe in. Or any movies. I won't do any movies that I don't believe in. Once again, there is some news about Anand Ahuja. I do not talk about my personal life. I've been in the industry for 10 years. I never speak about my personal life, and that is why nobody else has asked me that question, because they know I won't answer it. Last question. Staying on the Dutt biopic, you said, ask the director. The director has already confirmed that you are doing the role. So now we can speak No, I can't discuss it. Thank you so much. Thank you. एक पिक्चर करना है Thank you.
Madhu. Good evening, Sonakshi. Good evening, Sumit. This is Drop Dead Gorgeous. कैसे बोल रहा हूँ ना? Looking gorgeous. Thank you, guys. Thank you. No problem. You can stand also if you want. Thank you so much, yeah. Thank you, guys. Sonakshi looking angelic, straight out of the heaven, and very sizzling, very dashing, very gorgeous. और बोलो बोलते जाओ आप जल्दी में तो नहीं है ना? अब तो रुकना मत आप अभी जल्दी में तो नहीं है ना? नहीं, आपसे बात करे बिना मैं नहीं जाऊंगी सुमित, डोंट वरी। And your lip color is fabulous. ओ रियली, मेरे मेकअप आर्टिस्ट के साथ आधे घंटे झगड़ा हुआ कि मुझे ये नहीं चाहिए था, और उसने बोला नहीं आप पहनो, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं पहन के आ गई। See, I listen to people, I'm so nice. So many congratulations for the award. क्या था ये award? हमें नहीं मालूम, अंदर लिखा है। Well, this is a brand vision summit and I'm really happy कि मैं आज यहाँ पर आ पाई, and जब आपका हार्ड वर्क अप्रिशिएट होता है, मुझे पावर हाउस टैलेंट का अवार्ड मिला, तो बहुत ही पावर पैक्ड, लिख दो, हाँ लिख दो बहुत ही पावर पैक्ड साल रहा है मेरे लिए, 2 एक्शन फिल्मों के साथ, एंड जब आप एक रिस्क लेते हैं, आपका काम अप्रिशिएट होता है, लोगों को पसंद आता है, लोग ऐसे एक्नॉलेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर फॉर दिस इवेंट टुडे एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम इनसाइड। Sonakshi, नूर का फर्स्ट लुक काफी अप्रिशिएट हुआ है जी। on that front, and how's the shooting? आई एम रियली हैप्पी कि आपको इतना पसंद आया। इनफैक्ट मुझे इतनी अच्छी फीडबैक मिल रही है, हालांकि वो फर्स्ट लुक है ही नहीं, वो सिर्फ एक डेट चेंज अनाउंसमेंट था, इन लोगों को इतना पसंद आया। सो आई अश्योर यू, जब असली फर्स्ट लुक आएगा तो आप बहुत खुश होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, यू नो इट्स समथिंग दैट आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, और बहुत मज़ा आया at the shoot as well, so I'm waiting for it to release. People have been appreciating you in women-centric drama, so how do you look forward to taking this trend? I think it's a great trend that has started, and बहुत सारे लोग बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं keeping women protagonists in mind, which is great for you know our heroines today, and I'm really happy to be a part of that change in Hindi cinema. Yeah. आप पूछ रहे थे ना, पूछिए। अरे बाप रे मार क्यों रहे हो बेचारे को? जल्दी। सोनाक्षी, काफ़ी ब्रांड्स को आप एंडोर्स कर चुकी है, काफ़ी खूबसूरती के साथ काफ़ी ब्रांड्स, तो वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी ऐसा न्यूज़ आती है कि ब्रांड जो एंडोर्स करता है उसके ऊपर ही सारा ब्लेम आ जाता है, आप क्या टेक लेती हैं? जी सवाल सुन लो। आई थिंक येस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर्सनली आई लाइक टू एंडोर्स, आई प्रिफर टू एंडोर्स ब्रांड्स जिसे मैंने कभी इस्तेमाल किया है या मैं इस्तेमाल कर पाऊँगी, जो किसी के लिए हानिकारक ना हो, यू नो जो लोगों को भी पसंद आए। सो ऑब्वियसली इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा नाम खराब ना हो, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनके नाम को अपहोल्ड करें। सो इट्स अ म्यूचुअल। सोनाक्षी, आप काफ़ी बेबाकी से अपने आंसर्स देती हैं हर सवाल के, काफ़ी लिंकअप्स की भी खबरें आती हैं, तो आपका क्या टेक है बंटी सचदेवा के साथ आपका नाम? अगली सवाल। आई थिंक इट्स अ डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, वी शुड रिस्पेक्ट इट। हमारे देश में ऐसे बहुत सी चीज़ें हुए इन द रिसेंट पास्ट जहाँ पर पेट्रियाटिज्म की फीलिंग जागी है लोगों में, एंड आई फील कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर लोगों को you know to instill that sense of patriotism in people, it's fine. सोनाक्षी, क्या आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं? आपको इंटरनेशनली काम करना है वहाँ पर, एनी प्रोजेक्ट? जी अभी फ़िलहाल मैंने सोचा तो नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग ओवर हियर। मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है, एंड आई फील कि मैं खुश हूँ यहाँ पर। बट अगर कोई ऐसा मौका मिला जिसे मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाऊँ, आई वुड टेक इट अप। Last question. एक्चुअली करण एंड मी मेट दैट डे एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि वो मुझे किसके साथ बुलाए शो पर, तो मैंने भी उनसे कहा कि आप भी सोचो, पुट योर थिंकिंग कैप ऑन, एंड ही टोल्ड मी यू ऑल्सो थिंक। सो वी हैव नॉट येट थॉट ऑफ एनीवन, but hopefully when we find somebody that I can go with, you will have the answer very soon. Sonakshi, last question. पोस्ट ने काफी अच्छा किया, फोर्स 3 की अनाउंसमेंट हुई है, तो यू बी अ पार्ट ऑफ इट, एनीथिंग? मैंने सबको वार्न करके रखा है, फोर्स 3 मेरे बिना बनेगी ही नहीं। जॉन को, विपुल सर को, अभिनय को, सबको वार्न करके रखा मैंने। करण की बात करें तो वरुण और अर्जुन का एपिसोड था, उसमें आपका नाम
नाम बहुत लिया जा रहा था बीच में, तो आपका क्या रिएक्शन था? जी मैंने वो एपिसोड देखा नहीं है तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। जी नेशनल टेलीविजन शो है। हाँ पर देखा नहीं, अब मेरी क्या गलती है? बहुत सारे शोज है जो मैं नहीं देखती हूँ। हाँ टेलीविजन शो है, ऐसे शो पे आप आउट ऑफ द वे जाके बात करें, जैसे हम रणवीर कपूर और रणवीर सिंह की एपिसोड की बात कर रहे हैं, और एकदम उनका जो टॉक एकदम नॉनवेज टॉक था एक हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है फैंस पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है? मैंने ऐसे टॉक किया नहीं, लेकिन आपके तो आप उनसे पूछो ना उनके टॉक के बारे में। सेलिब्रिटी आप भी हैं और एक वो भी हैं। नहीं बट उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे। आई थिंक ये आप किसी से कह नहीं सकते हो। उन्हें उचित लगा तो उन्होंने बात किया। पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा ऐसे बात करते हुए। मैं करूँगी भी नहीं क्योंकि पर्सनली इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। Hello. Thank you very much. Go. One second. Tell us something about the award that you just received. Well, it's a versatility award, and I'm glad that I got it. And as I said inside, versatility is, for me, is just self-actualization. And over a period of time, you keep growing older and wiser, and it becomes versatile. How difficult is it to maintain this look for your movie? Oh, I have to shampoo my face as well as my hair. How is it being directed by Rajkumar Singh? Well, the movie has not started yet, but already my interactions with him have been great. I've been a great fan of his work, and I think he makes real larger-than-life cinema, and his male protagonists as well as his female protagonists are very, very enriched characters. And so I'm really looking forward to working with one of the best directors in the country. A little bit about the research and homework that you have done from your part. Oh, there's a lot of research that goes into it. Basically, a lot of research is going into one's own self and also the Sikh religion, as well as,
handling those weapons and being a person who doesn't have mobile phones, Facebook, Twitter and all these things in his life, not even electricity. So yeah, it's a good experience. I'm having fun. Randeep, congratulations for the award. Thank you. कुछ हमें बताएंगे ये award किस श्रेणी में था, किस कैटेगरी में था? Versatility. Versatility था कि भिन्न भिन्न प्रकार के की छवि रखना मेरे ख्याल से. He asked this question, then I will ask you. सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिस पर राष्ट्रगान को हाँ? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है What? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है राष्ट्रगान का कंपल्सरी Well, national anthem has always been played in cinemas in Maharashtra. all over India. So it's a good thing. What's wrong with Everyone it? should rise in respect for the same. So he wants to know What your opinion? I think if they play the national anthem, it is but your duty to stand up and rise to it. I don't see any problem. I have never ever had the feeling that I can sit and relax when my country's national anthem is being played. I don't think that is in good taste, or neither is it respectful. Sir, from one biopic to another, how challenging is it to be part of different biopics, and how do you set up as an actor? I think I am one of those fortunate actors who's had the pleasure of doing biopics, and I get cast in those roles quite often. It's not a deliberate choice, but I enjoyed a lot. And I think it gives me the whole versatility angle is because I do biopics and I don't play myself. I don't think I've ever played myself except for a bit in Lal Rang. But yeah, so I enjoy being other people. So in terms of sport fighting, any special? Gatka. That is what you're doing. Gatka, you know the Gatka? No, just heard about it. Gatka is a traditional Punjabi sword art. Yeah. Who are you getting trained from? यार नंबर दे दे मैं बाद में तुझसे बात करूँ. Okay, thank you very much. अच्छा और कुछ? Okay. Missing you a lot in Mumbai these days. घर गए थे आप अपने स्कूल वगैरह में गए थे? जी मैं स्कूल गया था. 24 साल बाद स्कूल गया था. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अपने स्कूल में MNSS राय स्कूल है मेरा, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, और वहीं पे मैंने घुड़सवारी और एक्टिंग वहीं सीखी थी, और ज़िंदगी के दाव पेच अबाउट बर्ड्स एंड बीज भी वहीं सीखा था. तो आई वाज वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एंड फेल्ट वेरी हम्बल्ड and got in touch with that child, I think, which we should all be in touch with. And yeah, so in school I used to act and ride horses, and now still after all these years I'm acting and riding horses. Either I have not gone anywhere or I think I'm having the best life. अवार्ड यहाँ मिल गया. इस साल जो अवार्ड फंक्शंस हैं उसमें आपकी इस बार फिल्में आई है जहाँ आपका अभिनय काफ़ी प्रभावशाली रहा है, तो अवार्ड की इच्छा है आपको? नेशनल अवार्ड भाई पहले देखिए, आप काम कभी अवार्ड के लिए नहीं कर सकते हैं. आप काम सच्चाई से उस मोमेंट के लिए, उस फिल्म के लिए कर सकते हैं, और कौन उसको रिकॉग्नाइज करता है या नहीं करता है, ना तो इसमें आपकी कोई ज़बरदस्ती चलती है, मेरी तो नहीं चलती है, और ना ही कुछ चलनी चाहिए. मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम कम हो जाएगा उसके लिए. आलिया की बहुत प्रशंसा की थी आपने. आलिया इस बार उड़ता पंजाब और अभी उनकी डियर जिंदगी फिल्म आई, काफ़ी उसके लिए सराहा जा रहा है. ऐसा लगता है उनका काम बहुत? Yeah, I think she's growing up into a fantastic actor. I hope she can keep it up. I'm very fond of her, and I think it was a second film that she did with me, and I think we interacted as human beings and as actors very well, and I wish her all the best. I love her a lot. Randeep, time and again you have always been written as one of the sexiest men from Bollywood. They say women love men with beard, so how has the new look been? It is providence, my friend. कि ये साल बियर्ड का वो चल रहा था, तो मेरे को पिक्चर भी ऐसी मिल गई जिसमें बियर्ड रख सकते हैं. तो आई एम विद द फैशन. आई थिंक गॉड इज लुकिंग आफ्टर मी, माय फ्रेंड. So you are with the fashion, or fashion is with you? Fashion is with me. Thank you. Thank you, Randeep. Thank you very much, guys. It is the award. It is the award. Award. Award guy, भाई. Sandeep. Sandeep.
There you are. This is yours? No. No, they could zoom in and probably release it. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah, here.